जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक सिंधु सुंदर सब लायक शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता मोदक प्रिय मुद मंगलदाता विद्यावारिधि बुद्धिविदाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे मागत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गणपति बाप्पा मोरया Thank you, Rajesh Lahoti and Meenal ji. रियली देखते हैं गणपति बप्पा ने आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी।
माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राचनी माथे साजे बोरलो पैरा में पायल बाजनी चुड़लो चम चम चमके साहा में मेहंदी राचनी ओढ़ के चूनर पचरंगी सज धज कर आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा घूमर खालो में पियाजी ढोल लगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी घूमर खालो में पियाजी ढोल लगाड़ा बाजे जी दो राणा जी ठाणा सागे घूम घूम के नाचे जी धड़ कोट सो घूमर घाले दड़ दड़ गाई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा मारा साए बाजी में तो घूमर रमबा आई सा Very nice. Very nice. Performers. Okay, can we request everyone to please take their seats as we move forward now with the program with a great Josh, I understand. So, after the Ghumar, how is the Josh? Okay, great. More loud sign. How is the Josh? Yes, sir. Okay, take your seats, please. I'd like to ask all of us to stand for the national anthems. We'll have the U.S. national anthem followed by the Indian national anthem. Our presenters for this morning will be Swani Bhattar, who will be presenting the U.S. national anthem. The Indian national anthem will be presented by Sunita Ji Jawar, Charvi Damani and Dhruv Chandam on the piano. May I request Swani to be on the stage and the other performers also to be on the stage. Request all of you to stand up for the national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that a flag was still there. Oh,
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you, Suhani Pattad, Sunita G. Zamwar, Dhruv Chandak, and Charvi Damani for reciting the national anthems. आज के सभी विशेष अतिथि को हम दीप प्रज्वलन के लिए मंच के सन्मुख आमंत्रित। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें जिससे कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। प्लीज टेक योर सीट्स। चलिए, हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से होती है, जो हमने करी, बहुत शानदार तरीके से करी, और इसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे मध्य हमारे अतिथि मौजूद हैं, हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं, और मैं शरद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया शरद जी शैलेश जी को और आप दोनों को कृपया मंच पर लेकर आएं। शरद जी, शैलेश जी और स्वाति जी का करतल ध्वनि से स्वागत। इन्हें कौन नहीं जानता, इनकी ख्याति पूरी दुनिया में विख्यात है, और मैं निवेदन करूंगा शैलेश जी, स्वाति जी को मंच पर आने के लिए और शरद जी का उन्हें अभिवादन करने के लिए। शरद जी। आपसे निवेदन है, स्थान ग्रहण करें। मैं नरेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि रुमा देवी जी को कृपया मंच पर लेकर आएं। नरेंद्र जी, रुमा देवी जी मंच पर पधारिए। इसके बाद स्वप्निल जी तैयार रहेंगे। रुमा देवी जी को भी हम सब जानते हैं, इतने पुरस्कारों से सम्मानित हमारे मध्य वो मौजूद हैं, और हम 2 दिन से उनसे विभिन्न वार्तालाप कर रहे हैं। वी आर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू हर। गिव हर अ बिग शाउट। थैंक यू। स्वप्निल जी, कार्तिकेय जी को लेकर पधारें स्टेज पर। स्वप्निल जी। घनश्याम जी तैयार रहेंगे इसके बाद। Welcome Kartikeya ji to the city of Houston. Thanks for coming all over from India only for this visit. Thank you. मैं घनश्याम जी से अनुरोध करूंगा कि वो हम मालानी जी को लेकर आएं, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं रमेश जी और किरण जी का। दोनों ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से अपना तन मन धन हमें समर्पित किया है, जिससे कि हम यहाँ पर सफल हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे डायमंड प्लस स्पॉन्सर हैं, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सरशिप करी है, आपका मंच पर स्वागत है। Ghanshyam ji is our BOT chairperson for the national US. BOT is Board of Trustee, that is our highest body, और Ghanshyam ji is chairing that. So from MMNA side, he is our topmost chairperson. धन्यवाद। मैं अभिलाषा जी से विनती करूंगा, हमारी MMNA की प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट अभिलाषा जी, जो कि रमेश जी और किरण जी को स्टेज पर लेकर आए। रमेश जी और किरण जी, इन्हें इस शहर में, इस प्रदेश में, इस देश में कौन नहीं जानता। पिछले अनगिनत वर्षों से इन्होंने इस समाज की सेवा करी है, और अकेले समाज के ही नहीं, अपने कार्यस्थल को, अपने जो
अपने इंडस्ट्री को इन्होंने पूरी तरह से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए न्यौछावर करके रखा हुआ है। यहाँ की सारी हिंदू गतिविधियों का केंद्र रहा इनकी संस्था है, और इन्होंने जिस तरह से पूरे समाज की और सबके बीच में बढ़कर उसको संवारा है, संभाला है, उसके लिए बहुत बहुत आग्रह आपका। धन्यवाद। स्थान ग्रहण करिए। और मैं हमारे दो को कन्वेनर्स, उनको कौन भूल सकता है, द बबलीज संजय जी जाजू एंड अर्चना जी भक्कड़, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज टू मेक सम नॉइज। वेयर इज द डैलस एंड ह्यूस्टन टीम? कृपया स्टेज पर पधारें और हमारे बीओटी चेयर और एमएमएनए प्रेसिडेंट का स्वागत करें। आइए। सो आप ब्यूटी चेयर में श्री घनश्याम जी का स्वागत करेंगे। और स्वप्निल जी कहाँ हैं? वेयर इज स्वप्निल? ओके, चलिए मैं अनुरोध करूंगा अब अभिलाषा जी का स्वागत करिए। नरेंद्र जी, अभिलाषा जी का स्वागत करिए। और हमारी दो बच्चियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू। पीछे से जाओ उधर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे ह्यूस्टन की आपने बहुत शोभा बढ़ाई और एमएमएनए की शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सभी स्पेशल गेस्ट का और हमारे डोनर्स का। आपने हमारी इस सुबह को और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए हैं। आई वुड नाउ लाइक टू कॉल द वन पर्सन दैट हैज बीन वर्किंग tirelessly for months in a row. He has been attending and hosting a lot of Zoom calls, WhatsApp messages, and has been convincing and influencing all the team members. Getting work done at work is authority, but getting the volunteers to make sure they influence and continue to cooperate and bring this event together has been this person's one and only one task. He's been managing and negotiating with all the vendors. The food so far has been excellent. The hotel is wonderful. And this event, I think, is just exercise, big as Texas. I now call the selfless leader, Sharaji Mantri, for his welcome speech. It's all happening and it came together. Convention is a reality, right? Jai Shri Krishna, Khammagani, respected guests at the dais and all the attendees. I would like to welcome you all for the 10th convention, IMRC convention at Houston. It takes time, effort, energy and commitment to put this kind of event together. I thank you all for traveling from various places and being part of this convention. I would like to go back to the start of when it happened. In 2019, when Southwest chapter was asked to host this event, Kishore uncle, Kishorji Lohiya requested me, saying that can you be the convener? Frankly speaking, I was nervous, but at the same time, I was confident on this chapter, we will be able to host it. So I did say yes. And today, you can see, we have this convention hosted with all the Southwest team and various volunteers from various chapters. And I'm very, very happy to say it has been come out very well so far. We started in 2019, and as you all know, we were supposed to do this on 2020, but COVID came in, and we had to plan differently. And I can tell you the whole team was behind us, they were ready. They took the 4 years time and did not complain anything. They put all the effort for 4 years. And we were able to pull this together.
We started the planning with thinking what should be the theme of this convention. And we decided on Rishte Reet Rivaj. This is the perfect time to cherish our relationships and celebrate all the cultural event, our culture, right? During the Thanksgiving. So that's why we decided on this theme, Rishte Reet Rivaj. There was a lot of debate and the team was happy after the end of the day and we did this. As you know, this convention has done many things first time. This is the first time a chapter is hosting this convention second time. This is the Southwest chapter first time we have been celebrating this. This is the first time we have crossed all the numbers of previous conventions. We have 900 plus attendees. We are doing one more thing first time. We are taking the convention away from the venue. We are taking everybody to the ranch. That is also done first time. Right? Yes, go Tex-Mex. As you know, there are so many members today. I would like to call all the outside Southwest chapter members to say Khamma Gani. Can I get a big Khamma Gani from everybody who is from outside the Southwest chapter? Now all the Southwest chapter, how do you all? नहीं, ये टेक्सास स्टाइल नहीं है, थोड़ा जोर से. Yep. This convention is not possible without the support of all the volunteers. As you know, everybody has to work for this kind of event. It is like a 900 people barat coming to your place for a 4-day wedding. So we have to take every measure, right? We had 150 volunteers split around 18 teams working all the 4 years to do this. I'd like to give them a big round of applause. Yes, संजय जी का कहना है कि बारात सजी हुई है, स्टेज सजा हुआ है, कोई शादी करने रेडी है तो हो जाएगा. पंकज और रूपाली को री कर देते और कर लेंगे. आज संगीत हो जाएगा, कल शादी हो जाएगी, रात में सेलिब्रेशन भी हो जाएगा. Any guesses how many weekends, hours and weekdays this volunteer spent together? I was calculating and then I gave up. It is more than 150,000 hours put together. We had a strong core team which was supporting and guiding these volunteers. A lot of people are doing this first time. They don't know what a convention is, but they were following the guidance from various members of the core team, CAST team, national committee, everybody. The core team consists of my co-conveners, Sanjay Ji Jaju and Archana Ji Bhattar. The experience and guidance from Kishore Ji Lohia, Sushma Ji Pallod. Calm and ever ready to help, BOT member Narendra Ji Jawar. NEC member Swapnil Ji Chandak, who was the liaison between the two teams. Anytime we needed anything on legal issues, he kept us on track. We had CAST team, which was guiding us, which was helping. Thanks for all the members from CAST team who have guided us, helped us. This convention started under the leadership of Vikas Ji Bhutra in 2019. Thank you, Vikas Ji, for believing in us and believing in me. A special thanks to our current NEC president, Abhilasha Ji Rathi. I know many of you know her passion for MMNA. I remember calling her night 1 o'clock or morning 6 a.m. She is ever ready, with the same Josh, with the same spirit. Thank you, Abhilasha Ji. Now, this kind of convention don't happen without sponsorship. This is a big event, and thanks to all the sponsors who have pitched in, helped us. This convention came at such a time when all the prices were going up. Everything went up after COVID.
but we did not change registration because we had the strong support from the sponsors. Everybody came in, they said, don't worry about it, we'll do it. More than 50% of expenses are paid from the sponsorship. There are many sponsors. Sorry, I cannot take everybody's name, but I'll appreciate everybody. I want to give special thanks to two people who, the day I said I'm doing the convention, they were behind me. They said, we'll support you throughout. Jugal ji or Raji Malani, or Ramesh ji or Kiran ji Putra. They were my guiders. They were my backbone. Anytime I needed, they would help me on guiding and making sure that they help me on anything I need. So thank you. Now I would like to take you through the schedule of this convention. Anup, if you can show the slide. So as you all know, yesterday was our host chapter night. And I'm sure all of you liked the cultural program which was put together under the leadership of Shraddhaji Budra, was our lead for cultural. And there are more than 110 people involved in making it. It is not easy, but they pulled it together. There were kids from age 8 up to age 70, old seniors, everybody participated in it. Our aim was to get everybody together, get as many participants, so we were able to execute it. Thank you. Now coming to next day, that is second day 2. Today we have a jam-packed schedule for you. So breakout sessions after the opening ceremony. We have Mahesh Tank, which is based on the Shark Tank, and where our emerging entrepreneurs are going to put their ideas together in front of the bunch of investors, and looking for that event will be great. Everybody, this is the hall where the event will happen. Then come Mahasangram, which is a debate on the conflict between generations. All of you know, everybody has this conflict. If you have a teenager or a younger kid, आपको समझ में नहीं आता है, आप पुराने ज़माने के हो, हम कहाँ समझ नहीं हो. That is all going to happen during that Mahasangram. Then we have event matrimonial, emotional intelligence. Then in the evening we have guest chapter performances, which all the chapters are going to compete. We have an event from Ruma Devi ji today at 4 o'clock. She will be giving her inspiring speech and telling about inspiring us more. We have evening with Shailesh ji Lodha at today evening. We are waiting for the event, sir. Yep. Then tomorrow, that is day 3, as I said, we are doing something different. We are taking you all to the ranch. Be ready. We'll have a Texas experience. We'll watch a rodeo. We will experience the Tex-Mex food, which you cannot get outside Texas. Yes, everybody will serve it, but it's not like Texas. After coming back from ranch, we are going to have our gala night, where we have niche entertainment, doing a retro to metro theme and entertaining us during the evening. After that, all the night owls be here. You have DJ going on, you'll have Antakshari going on, you'll have Rajasthani Geet going on. So everybody will have something to do. If you're not sleeping, you are here. We also have dedicated programs for kids. Kids from 5 to 12, or rages, everybody has it. I'm going to take a couple of more minutes, though my timer is gone. Food. Rajasthan or convention hai. Khano to rehno chahiye. You will experience the best food. We have planned for all the cuisines: Rajasthani, North Indian, South Indian, Thai food, Indo-Chinese. So everything is planned. Aaj dal bati hai, lunch ma. The food team, under the leadership of Triveni Mantri and under the guidance of Sushma ji Pallod, have done a great job on planning it. It's not easy to plan 900 people's food. I would like to thank
couple of people from my family who are here, who have supported me. My brother Santosh, who is here from, luckily it worked out, but he is my backbone to support so that I'm able to dedicate my time for this convention, right? My in-laws, Ghanshyamji Sada and Basanji Sada, they have been supporting. Kana khano ko fikar ko nahi karna pade mana. Kada dinner ko nahi hai, lunch ko nahi hai. I'll go there, I'll have in time. Yeah. Other person to help support was Dhruv, my son. He is a teenager, and you know teenager tantrums. Yeah, he was sometime upset. We are not able to give him time. But I told him after the convention, all is his time. I would not end my speech without thanking one person who has been my backbone and been supporting throughout. I am the front face, believe me. The backbone is there. That's my wife, Triveni Mantri. Lastly, I would like to say we have tried our best to put together a wonderful program. Enjoy every event. If you have missed anything, please pardon us. अगर हमसे कोई भी गलती हुई है तो हमें माफ कर देना. जय महेश. Thank you. धन्यवाद. थैंक यू. अगर इस तरह के लीडर्स मिले तो हमें कितनी खुशी होगी. We will always be so happy to have leaders like शरद जी, जिनकी लीडरशिप में हमने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है. चलिए इसके बाद हम बुलाएंगे सभापति, हमारे चेयरपर्सन, बीओटी चेयर श्री घनश्याम जी को. And no program can be, successful without all the donors and the support from our strong donors. So Ghanshyam ji आएंगे सामने, and then he will be talking about how we have made this program successful. So Ghanshyam ji, please. IMRC 2022 के अतिथि, guest of honor of IMRC 2022, Sri Dr. Ruma Devi ji, Sri Failesh ji and Swati ji Loda, and Sri Baldava ji. Members, Board of Trustee, all members of various chapters and various MMNA initiatives, life members of MMNA and all attendees. Jai Mahesh, Jai Shri Krishna. It is a great pleasure to see you all face to face under one roof after a span of about 4 years. Coming to Houston is like a full circle for me. My first MMNA convention was here, not too far from this place, Galveston, in 2003. That was my first MMNA convention, and that is where I met Shri Babulal Ji Rathi. And you know what? I became the life member since then. And returning back to the same city after almost 2 decades, or less than 2 decades, and speaking to you from this august stage as the chairperson of the Board of Trustees is absolute privilege and honor. We wanted to be here in person in 2020, for which preparations began in 2019. Due to the COVID pandemic, we had to change the in-person gathering to virtual gatherings, Utsav in 2020 and Mela in 2021, under the superb leadership of Sri Vikas Ji Bhutada and Srimati Abhilasha Ji Rathi, our current president. COVID pandemic has certainly forced us to postpone our in-person gathering, but it couldn't slow down our enthusiasm, resolve and spirit. The hard work, determination and great enthusiasm of Southwest Chapter under the leadership of Sri Shwarji Mantri didn't go in vain. I therefore consider this convention as very special, as it is the result of the hard work of last 4 years.
planning and dedication. May I congratulate Sharadji Mantri, Archanaji Bhakkar, Sanjayji Jaju, and the entire team for organizing this grand convention. Today and next couple of days, you will find yourself submerged in tons of breakout sessions and activities with arts and entertainment that are catered for every age group, with a unique experience of Texas and Rajasthan. MMNA was started by a few dedicated, enthusiastic individuals in 1983, and today it is a global organization serving the socio-cultural needs of Maheshwari families of North America. MMNA owe a lot to our founding fathers for their vision and initiative. Today's MMNA stood on the hard work and dedication of all the previous presidents, trustees, office bearers, and a huge army of volunteers. Social work or Samaj Seva can only be done with a passion and desire. This is not something that can be forced upon. Therefore, I deeply admire all office bearers and volunteers at both national and chapter level who are giving their valuable time in service of the community. Words simply cannot thank these individuals. We are a small community spread in a vast land of North American continent, but our unity, coordination, and sahyog with each other is exemplary. I congratulate all chapters and coordinators of MMA initiative for making us feel like one large family. Dear all, if I had to compare MMNA with a book, then national organization is its cover page. All regional chapters are the chapters of this book, and donors are its colorful pages. Without donors for their generosity, without chapters for their amazing hard work, and without the support of life members and all of you, this MMNA book is incomplete. My sincere thanks are due to all the prominent donors for their generosity in making this convention possible. I specifically would like to thank Sri Jugalji and Rajji Malani, Sri Rameshji and Kiranji Bhotoda, Sri Pankajji and Rupaliji Maheshwari, Sri Vasantji and Prabhaji Rathi, Sri Vijayji and Sushmaji Pallod, and all donors at various levels. Lastly, I would like to thank all life members of Southeast Chapter for electing me to represent them in the Board of Trustees, and all my fellow trustees for giving me this opportunity to serve you. I urge all life members, especially our youth, to engage with their tan, man and dhan in the service of MMNA. And in this context, I would like to happy to announce that for the first time in the history of MMNA, we have prepared the life membership cards for all our life members. And these cards, which have got all the information and that can be carried in your wallet, and have all the information, your specific ID number and the year since that you become the life member, will be available to you this afternoon after the lunch. So I urge all life members to please collect your life members and carry them in your wallet. And with that, I thank you very much, and please enjoy the rest of the convention. Thank you. Dhanyavad Ghanshyamji for honoring our donors, and a special thank you to all amazing donors who have opened up their wallet generously to make this event a possibility. I am a life member. I'm looking forward to my card, and I would urge every one of you to please be life members of the MMNA.
Unfortunately, Shyamji Soni, who is the Akhil Bharatiya Maheshwari president, could not be within us due to personal reasons. He has taken time to send us a special message. I would now request our DJ team to put the special message from Shyamji Soni. We're having some technical difficulties, so we'll move along with the program and we'll come back to this. Over the last 4 years, Abhilasha Ji Rati, or as I fondly call her, Abhilasha Auntie, has been the backbone of the Maheshwari community in the United States. From leading countless NEC and IMRC meetings, to recognizing chapters and initiatives for their outstanding work, to remembering our birthdays and special occasions, Abhilasha Auntie has led MMNA with professionalism, grace, and the utmost sincerity, and that too through a global pandemic. She somehow manages to keep us on topic so that meetings don't run too long, which is a monumental feat on its own, as many of you may know, but also somehow maintains a bright and positive demeanor throughout. I'm very honored to have had the pleasure of working with Abhilasha Auntie over the last few years and have learned quite a bit about being a great leader from her. Please join me in welcoming Abhilasha Auntie to the stage. जय श्री कृष्णा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सोने जैसी रेत जठे जहाँ चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रूप सोवनो प्यारो म्हारो राजस्थान. कुछ समय पहले ऐसा लगा कि हम सब थोड़ी देर के लिए राजस्थान पहुंच गए हैं. इतना सुंदर घूमर IMRC की ओपनिंग सेरेमनी में पहली बार देखा है. इस प्रोग्राम की इतनी सुंदर शुरुआत करने के लिए राजस्थानी स्टाइल में साउथ वेस्ट चैप्टर को बहुत बहुत बधाई. कंग्रेचुलेशंस. On behalf of entire team, I would like to welcome you all to IMRC 2022 11th convention, including virtual Utsav. Our guest of honors, Dr. Ruma Devi ji, Shri Shailesh ji Lodha, Swati ji Lodha, Shri Kartikeya ji Baldwa, our donors, Shri Ramesh ji Bhutra and his wife, Malani ji and his wife, and many other donors. Our convener, Shri Sharad ji Mantri, co-conveners, Shri Sanjay ji Jaju, Srimati Archana ji Bhakkar. Our Board of Trustees Chair, Shri Ghanshyam ji Heda, Shri Narendra ji Jhawar, Board of Trustee, our National Executive Team Member, Swapnil Chandak, Southwest Chapter President, Shri Pramesh ji Maheshwari, all the IMRC attendees, thank you. Thanks to all the volunteers for their dedication and their support to make this convention happen. I feel proud to be Rajasthani and I'm fortunate to be part of MMNA Parivar. We are all here because of our founders. They had the vision almost 40 years ago to form this organization. Today, we have 600 plus life members and 5,000 plus members, and they are growing every day. There are 9 chapters in US, and we also have Canada and India. We have many people attending IMRCs. We have 8 initiatives, thanks to all our leaders for bringing MMNA to this level. Now, I want to share what we have been doing for last 2 years. Our chapter presidents have been actively bringing our members together through festival celebrations and fun events. I would like to thank them all for remaining connected during these challenging times. Get ready to see their performances at the chapter night. Let's see who wins. Our initiatives also play a very key role in bringing MMNA members together and also contribute towards the overall success of MMNA. Last year, we launched a new initiative, Professional Networking Group, which has almost 300 members on LinkedIn. Team had 2 very successful events, the Fireside Chat with the diverse group of panelists, which was moderated by our past president, Shri Vikash ji Bhutra, and also a unique session on emotional intelligence, which was moderated by Raj Heda.
Our Sakhis, can I hear from Sakhis? Our Sakhis kicked off last year Gangor event, which was a huge success, which was attended by 200 plus Sakhis. Our philanthropy team, they did the great product drive for women, which was very unique and again successful. In addition to that, at the chapter level, there are many philanthropy activities. And during pandemic, we joined hands with Seva International to provide support for COVID relief efforts in India. Our matrimonial team had a very successful virtual mixer and parichay sessions for singles. Now we have the mobile app. Please check it out. Please download the mobile app. I hope we will have many more marriages as a result of this mobile app. The education team has become more efficient as they continue to raise funds, give loans, and collect the loans. Our business team hosted a leadership session. Our race team, you just heard from Sarika, has been encouraging working with junior race. They have 30 plus mentorship pairs to provide the college, career, and personal mentorship. They are also embedded in all our initiatives, and they have joined hands in organizing IMRC. They're everywhere, you will see them, starting from the registration desk. Our operational teams, CAS team, who have always guided IMRC teams with their past experience, and also TAS team, which manages our website. MMNA is also very well connected internationally with Maheshwari and Rajasthani organizations. Because of strong leadership of our recent past presidents, Vikasji Bhutra, Paragji Bajaj, the Commissioner of Rajasthan Foundation, Dheerajji Srivastava, founder of Maheshwari Connect magazine, Prashantji Lahoti, AVMM President Shyamji Soni are all very well connected with MMNA. They were guest speakers for many MMNA virtual events in last 2 years. I also had privilege to meet Shri Omji Birla, Speaker of Lok Sabha, during his visit to Boston. MMNA continues to grow, and we look forward to welcoming new members and ask that you become life members. We have also accomplished a lot, but we have a lot more to do. To keep growing, we need more volunteers, so please take time to reach out to any one of the committee members. Finally, I would like to thank my entire family for the support and encouragement. I miss my father, Shri Vijay Kumarji Tauri today, and some of you may know he was on this podium in 2003 and played a key role. I miss you, Mom, who is in India today, thinking what is happening here, but she had faith in me and made me who I am. I want to thank my husband, Bharat. He's always there, silently supporting me. My younger daughter, Shreya, who's here today, my elder daughter, Suhani, and her husband, Abhilash, newlyweds, my mother-in-law and father-in-law, who are very well known to MMNA community. Daddy Ji is the go-to person, and not just for some of you, but anybody has any questions, people just say this phrase. Rathi uncle ko call kar lena, pata chal jayega. Thank you, Daddy Ji. Thank you, Mummy Ji. IMRC is a forum where we share our passion about Rajasthan history and heritage. I want to highlight few key facts about this convention, which has been already repeated. Second time Southwest chapter is hosting this convention. 900 plus attendees who have gathered here today. Instead of sitting inside, we have a trip planned. Make sure you have good footwear. We will see some unique breakout session, Mahesh Tank, Mahasangram, and also other initiatives have planned many sessions. Sit back, enjoy melodious songs on the gala night by the top performers from India. Thank you to honored guest for inspiring us. Ruma Devi Ji, Shailesh Ji Lodha, we'll hear from him. Kartikeya Ji Baldwa, we heard from him yesterday. Special thanks to all the donors. Without you, this would not have been possible. And yes, of course, one thing everybody enjoys, food. IMRC team has planned wonderful food. बड़ी प्यारी लागे ये थाली राजस्थानी, जद आवे इमे चूरमा और बाटी,
दुनिया रो हर भोग लागे है फीको, जद हो जीवन वो भी राजस्थानी। I will quickly finish, but there is one very important segment we do during our opening ceremony. We have some really dedicated people, and there is a Lifetime Achievement Award. Can you guess who can be? Our past BOT chair, a chapter president during IMRC 2003, a committed Sakhi, someone who took the lead hosting IMRC for the second time. वहाँ के जन की मारवाड़ी कोई को नहीं बोल सके. I will request Sushma ji Palot to come up on the stage for the Lifetime Achievement Award, and I will request Daddy ji Prabhulal ji Rathi to come on the stage and present this memento to Srimati Sushma ji Palot. After a very successful convention, she continues to guide this IMRC team. Thank you, Sushma Didi, for all your guidance and contributions so far. And we know you will continue for many more years. There is so much to learn from you. And we know Vijay Bhaiya is always besides you. Please come up on the stage, Vijay Bhaiya. While we wait for Sushma Didi to come, there are two more special awards. There is someone, NEC Vice President, his leadership has been phenomenal. He is very well known for supporting at all the conventions in the past fundraising efforts. His reach to media is exceptional for MMNA events coverage. His Kavita in Marwadi is very well known to MMNA, instrumental in organizing MP picnics, recognized by Shri Shivrajji Chauhan, his great speaker, everyone knows him, I think you can guess by now. He was the Sutradhar for Virtual Utsav. No convention is complete until Shri Jitendra Ji Muchal is on the stage. Please, Jitendra Bhaiya, come up on the stage. विजय लक्ष्मी जी, अगर आप भी कहीं हैं तो आ जाइए. I will request Shri Ramesh ji Bhutra to give this award to Jitendra ji Muchal. I think this is someone who doesn't know what award she is getting. Lifetime Achievement Award for Sushma Didi. This is how she is working behind the scenes. And I will request Daddy ji to present this award. Daddy ji beti bolte hain Sushma Didi ko, so this was the perfect thing to do. Thank you. Next, we have one last award, and this is for someone, his leadership on the election committee for MMNA for last 10 plus years. This is a very critical role to play and very well fulfilled by Shri Padamji Maheshwari. His wife, Lataji Maheshwari, our treasurer of MMNA, has done exceptional work managing all the finances and accounting. Please come up on the stage, Padamji and Lataji. I will request our donors, Jugalji Malani and his wife, to present this award.
Thank you. Jai Shri Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी का, जो उन्होंने इतने सुंदर शब्द कहे और हमारे समाज के इतने कर्मठ कार्यकर्ताओं का जितना इतना सुंदर अभिनंदन हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं के लिए जिनका अभिनंदन हुआ है, ऑल थ्री ऑफ देम, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इतनी शांति क्यों है भाई? और हमारे यही कर्मठ कार्यकर्ता जब अपना तन मन धन सब देते हैं, तब हम सब साथ आ पाते हैं। इस तरह का आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम तभी हो पाते हैं जब हमारे मध्य हमारे इस तरह के कार्यकर्ता हों जिन्होंने पिछले कई वर्षों से हमारा साथ दिया है। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट घनश्याम जी टू कम फॉरवर्ड एंड फेलिसिटेट आवर डोनर्स। सो घनश्याम जी प्लीज आइए। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे मध्य मौजूद जुगल जी एवं राज जी को। प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लीज एक्सेप्ट द फेलिसिटेशन। इसके बाद आमंत्रित करूंगा रमेश जी एवं किरण जी को, वो पधारें और सम्मान ग्रहण करें। आप सभी ने इतना साथ दिया है कि आपके बिना ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकता था। जैसा शरद जी ने बताया, हमें डोनेशन से मोर देन 50% ऑफ द प्रोग्राम इज बिकॉज ऑफ डोनेशंस। कैन यू ऑल इमेजिन? ये हमारे डायमंड प्लस डोनर्स हैं। हमारी जो कैटेगरीज थी वो डायमंड तक की थी, पर उन्होंने और दिल खोल दिया तो हमें एक प्लस लगाना पड़ा वहां पे। और जैसा सब जानते हैं, रमेश जी सिर्फ डोनेट ही नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी संस्था, अपना पूरा सब कुछ तन मन धन न्यौछावर किया है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा पंकज जी एवं रूपाली जी को स्टेज पर पधारें। हमारे एमरल्ड डोनर्स पंकज जी एवं रूपाली जी बहुत एक्टिव है समाज में, और कल आपने सुना है उनको किस तरह से उन्होंने कार्यक्रम का होस्ट किया है। अकेले ये डोनेशन ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कार्यक्रम भी संभालते हैं, बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जब इस कई इवेंट्स होते हैं तो इवेंट्स को भी पूरा संभालते हैं और पूरा साथ देते हैं। पंकज जी, रूपाली जी। इसके बाद बुलाऊंगा वसंत जी एवं प्रभात जी राठी। वसंत जी एवं प्रभात जी राठी पधारें एवं सम्मान ग्रहण करें। वसंत जी, प्रभात जी मंच पर पधारें एवं सम्मान ग्रहण करें। और उसके बाद और हमारे लास्ट एमरल्ड डोनर विजय जी एवं सुषमा जी, अभी उन्होंने सम्मान मिला है। कहाँ है विजय जी, सुषमा जी? सुषमा जी कहाँ गई? शी इज नॉट हियर, शी इज वर्किंग। कर्मठ कार्यकर्ता इनको बोलते हैं। बाटी की व्यवस्था कर रही है। आप सबके लिए दाल बाटी की सुंदर व्यवस्था हो रही है। विजय जी बताइए। A big round of applause for our donors. आपके समर्थन, आपके सहयोग के बिना यह कार्यक्रम संभव ही नहीं था। और आप ही नहीं, हमारे मध्य रूबी हैं, हमारे मध्य गोल्ड हैं, हमारे मध्य ब्रॉन्ज हैं, पर हम सबको भी नहीं बुला सकते हैं। लेकिन आप सबका तहे दिल से, बिल्कुल हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो यह कार्यक्रम हम नहीं कर सकते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। A big round of applause. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, इतने सुंदर कार्यक्रम जो चल रहा है इसके बाद, और जिस तरह से अभिलाषा जी ने बात करी कि किस तरह से श्री घनश्याम जी सोनी, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया और कई बार उन्होंने ट्रैवल भी किया है, श्याम जी सोनी, नॉट घनश्याम जी, श्याम जी सोनी जो कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष भी हैं, वो किसी कारणवश यहाँ उपस्थित तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने एक सुंदर सा वीडियो भेजा है हमारे मध्य। सो लेट्स वॉच दैट वीडियो। उसके बाद हमें पता है कि आप हमारे 3
मुख्य अतिथियों का एवं मुख्य अतिथि को सुनने के लिए आतुर हैं। हम उन्हें बुलाएंगे इस वीडियो के बाद। लेट्स प्ले द क्विक वीडियो फॉर श्री श्याम जी सोनी। Okay, as usual, looks like we have some technical glitch. So let's move ahead with the program. We are going ahead. और मैं बुलाना चाहूँगा सारिका जी को so that she call upon our next अतिथि. Many of you have likely seen the influence of South Asian culture on consumer goods in the United States. It started with chai tea lattes, ghee butter, and naan bread, and most recently the influences of Ayurveda can be seen in golden lattes, also known to many of us as haldi doodh and ashwagandha pills. More than 65% of the global market share of ashwagandha exports come from KSM 66, making it one of the best-selling ashwagandha on the world market today. Extra Real Biomed is the maker of KSM 66 and is led by CEO Kartikeji Baldwa. Everything from assembling the initial team of scientists to acquiring farms and capital infrastructure to the market launch and product validation by regulatory bodies was led by Mr. Baldwa. He is the recipient of the Young Entrepreneur Award 2015 by iCove and the Herbal Industry Leader Award 2016 by the International Society of Ethnopharmacology. Without Mr. Baldwa, Ayurveda would not have the wide global recognition that it has today. Please join me in welcoming Kartikeji Baldwa to the stage. हमारे नित्य आराध्य प्रभु महेश एवं माँ भगवती के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर आसीन एस्टीम गेस्ट एंड ऑल द ऑफिस बेरर्स ऑफ MMNA और अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, धैर्य और कार्यनिष्ठा से विदेशी धरती पर अपनी योग्यता का परचम फहराते हुए और अपने समाज व अपने देश का नाम रोशन करते हुए आप सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम और वंदन। जय महेश। We feel proud to be a part of that Maheshwari community, which I believe is world's finest community. Immeasurably caring, highly successful, highly accomplished, and with a deep value system. Both Goddess Lakshmi and Saraswati ji have bestowed special blessings on our community, be it entrepreneurship or be it any profession. Our community members have given their 100% and have also been successful, besides the ability to mingle with the local community and the great values which we get in legacy from our forefathers. All of this was on ample display yesterday with the local cultural chapter event that happened. It was stunning in skill level and creativity, well beyond anything I have ever seen, including in India. So let's put together a big round of applause for the local Southwest chapter. I was literally numb watching the entire event. Moreover, congratulations also to the organizers for putting together such an amazing event. I happened to look at the schedule last evening and kind of got a bit confused when I saw there were 4 Nikasis, 3 Sangeets, 5 Barat and things like that, and I was wondering how could that be. It took me little time to figure out that these were the names of the venues. But in true sense, I believe that this event is at such a massive scale that there are 5 weddings put together. I've heard a lot about the bi-yearly convention of MMNA from my brother-in-law Anandji Daga and Vandana, who lives in Cupertino. So I have come all the way from India just to be a part of this convention for 2 days. I regret I have to go today evening. I wish I would have been a part of this throughout. In spite of all of you living abroad, you have a deep affection and love for our country, culture and community. What I greatly admire about MMNA is that all of you operate like a single unit. And by making Abhilasha ji the president of MMNA, you have exhibited the true spirit of gender equality and inclusiveness.
which means that there is no difference in what you say and what you do. I hope that our main body back in India, which is Akhil Bharatvarshiya Maheshwari Mahasabha, can take some inspiration from all of you, because I'm waiting for a day to see a woman leadership or even a woman office bearer in the main body of our Mahasabha. I certainly believe that women are much more capable than we men. And Abhilasha ji, I'm sure the way she's working with her entire team, she's doing a great job. Abhilasha ji, I don't know if you're aware of this, but let me tell you, the father of Abhilasha ji, late V.K. Tawri uncle, he was the founding president of an NGO called Mahesh Foundation, which is doing a fantabulous work today in the states of Telangana and AP. He chose my mom to be his successor, in spite of their being very enterprising entrepreneurs and great philanthropists. He chose her to succeed him because of the belief that she would take the organization to a greater heights, and also because he believed in the power of women. I'm sure Abhilasha ji, wherever he is today, he must be so proud of you and must be blessing you. I would like to close by observing that all of us might have experienced or do experience some kind of difficulties in our life. It may be personal difficulties, difficulties at our profession. Sometimes it feels like the world is coming to an end. Well, I would just say that keep your calm, gather yourself, and try to remember the story of Lord Sri Ram, because there can't be a more difficult life than what Ram had lived. Just imagine that a prince who was supposed to be a king tomorrow, where all the preparations of his coronation were made, he had to go to exile for 14 years just because to fulfill the wish of his father, the promise that his father gave to a stepmother. Without footwear, in adverse weather conditions, without any help, with no luxuries, he went into the jungle. His wife was kidnapped by Ravana. He had to find his army in monkeys, and after fighting several battles, he finally defeated the unbeatable Ravana because of his integrity, because of his character, valor, because of his ability to take the local people along, and because of his patience and intelligence. Because after every autumn, there comes the spring. हर पतझड़ के बाद वसंत जरूर आती है. राजवंश रूठे तो, राजमहल छूटे तो, राजमुकुट टूटे तो, सीतापति राघव से सात सीता का छूटे तो, हिम्मत ना हार करने सागर को पार, पत्थरों में प्राण फूंक सेतु फिर बनाना है. पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है. पतझड़ का मतलब है फिर बसंत आना है. थैंक यू. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. फिर से बसंत आना है. और जब हम सब यहाँ हैं तो बसंत है कि नहीं है ना? क्या बात है, बहुत ही सुंदर. हमारे अगले गेस्ट एक ऐसी शख्सियत और पर्सनालिटी जिन्होंने बहुत कुछ सीखा, अपनी दादी जी से सीखा, फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, एंड बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन ऑफ बाड़मेर की जो कहानी है ये कई फिल्मों की स्टोरियों में आती है और कईयों में आपको इनकी झलक मिलती रहती है. आप उसे सुनते होंगे, देखते होंगे. कितनी प्रेरणादायक कहानी हो. जब ये हमारे मध्य आई तो wasn't there an energy among all of us? Did you feel it or not? Who am I talking about? Exactly. She started learning embroidery skills from her grandmother. She leveraged it for her childhood and also empowered over how many women across Rajasthan? 30,000 women across Rajasthan. Let me welcome Romaji. Romaji is the recipient of the highest civilian award presented to a women in India by the President of India, the Nari Shakti Puraskar in 2018 by Shri Ramnath Ji Kovind. Big round of applause. She is also a doctorate in the field of art and textile by Mahatma Jyoti Rao Phule University, Jaipur, an ardent proponent of Rajasthani culture. जब से यहाँ पर आई हैं हम सबको मारवाड़ी खाना पहनना ओढ़ना सबके बारे में बहुत अच्छे से समझा रही हैं. और she is also a great proponent of Rajasthani culture and heritage all over the world. Let me not waste the time. Let me give her the podium. Thank you. राम राम सर, जय महेश, जय श्री कृष्णा. भमता भमता हंसला देखा बहु नीर, खड़ी पलक नी भूलिया मान सरोवर तीर.
आज ही हॉल रे मई विराजमान राजस्थान रा हंस पूरी दुनिया में घूमिया, 7 समुंदर पार आन अठे भी अपनी राजस्थान री संस्कृति ने नहीं भूलिया। बहुत प्राउड महसूस हुए कि राजस्थान रा लोग राजस्थान में रहते हुए भी अपनी जगह संस्कृति है मीने छोड़ता जा रहा है। अपना जगह युवा पीढ़ी है वे संस्कृति अलग होती जा रही है। लेकिन काले हूँ मैं अठे जगह प्रोग्राम देखिया और लाग्यो कि इतना दूर आन 7 समुद्रों पार बैठन अपने जकी युवा पीढ़ी है इन्हें संस्कृति जोड़न राख रहा हो। काले सामरो जको प्रोग्राम हुयो पूरे 12 मास में अपने राजस्थान में कोई कोई तीज त्योहार बार वर्तोलिया सब आपने बच्चों रे हाथे एंजॉय कियो। बहुत अच्छो लाग्यो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब रे लिए एक बार तालियां। मारो भी प्रयास वही है 2008 में काम री शुरुआत की भी कई अड़ी परिस्थितियां ही एक सुई धागो ले छोटे से काम री शुरुआत करी। पर अपने राजस्थान रे कल्चर ने बसावन वास्ते मारो हमेशा प्रयास रहे कि अपने बटेरी जगी गायकी है, लोक गायकी है, हरजस है, वीणा गायकी है, वाणियां हैं, मीरा कबीर गोरख जीरी, तो वे वाणियों लोग जकी युवा पीढ़ी है वे दूर हटता जा रहा है। लेकिन हमारी संस्था रे प्रांगण में रोज 2 घंटा सत्संग हुए, नया नया आर्टिस्ट आवे और बीरे माँ बच्चा भी शामिल है। तो आज की अपनी संस्कृति है बीने बसावन रो फर्ज अपनो ही है। बारला अमेरिका रा लोग अठे अपने बड़े राजस्थान में आन तो संस्कृति बसावेला कोनी। तो मने बहुत अच्छो लाग्यो कि 2 दिनों आपरे साथे हूँ मैं और बिल्कुल अब फील नहीं होयो कि मैं राजस्थान हूँ बाहर हूँ। अपने बटेरी बच्चियों राजस्थान री बहुत टैलेंटेड है लेकिन बारे पांगे कने एडी सुविधाओं कोनी कि बींगे जरिए बे आगे बढ़ सके। आज मैं बटे गांव रे मो एक एडो स्टेडियम तैयार करो जकी बच्चियों खेल कूद में आगे जा सके। बे बारे हाथे समस्या आ हुए कि बे घरे जा स्कूल घरे जान पाछे खेलन वास्ते नहीं आ सके क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुए बी टाइम तो बहुत धूप हुए बटे। तो एक एडो स्टेडियम तैयार करो जको करोड़ों की लागत आवे लेकिन हर समय बटे बच्चा तैयारी कर सके। एडो इंटरनेशनल एक स्टेडियम तैयार हो रही है, आने वाले टाइम में बच्चों ने लाभ मिलेला। यो ही जको सुई धागे काम री शुरुआत की मैं 2008 में। आज सिर्फ बाड़मेर में 30,000 बहनों तो हमारे हाथे डायरेक्ट जुड़ूड़ी है काम और राजस्थान गवर्नमेंट ने अब 28 लाख बहनों री ब्रांड एम्बेसडर बनाने एक और नई जिम्मेदारी दे दी। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स रे हाथे एमओयू हुयो है। महाराष्ट्र रे लगभग 50,000 बहनों ने स्किल कर मोने मार्केट उ लिंक करवानो है। मारो उद्देश्य वही है कि अपने भारत की जकी भी बहनों हैं वे खुद रे पैरों माथे खड़ी हुए सक्षम बने और किरे आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आई हमारी सोच है और हमारा उद्देश्य है। जब काम री शुरुआत की कई समस्याएं आई। पहले तो खुद घरों बाहर निकलने की हिम्मत को नहीं हुई, कई लोगों की बातों सुनी लेकिन आज में लाग्यो कि जकी बातों करेला वे घरे बोरी कदी नहीं पुगावेला। अपनो काम है वो ओपन ही करनो है तो पूरो फोकस काम माते राख्यो और मारी बहनों ने धीरे धीरे हाथे जोड़ता गया जिन्ना बोने लाग्यो विश्वास हुयो। 2008 में मैं किरे घरे जाती घरे में कौन जावन देता। आज एक महिला ने बोलूं कि दिल्ली जावनो 10 तैयार हुआ कि मैं जाऊला। हमेशा बहनों होचे कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं गांव में रहूँ, मैं मारो पहना हुआ पहरो तो मैं काम की करोला। बिल्कुल और नहीं होसनो अपी जटे हों जेड़ा हों अपने अपने लक्ष्य में ध्यान रखना है, अपने काम री शुरुआत करनी है। 3 कैटेगरी हुए, एक तो बहुत ही सक्षम बहने हैं, एक का काम री शुरुआत कर दी नहीं लेकिन आगे रास्ता नहीं मिल पा रही है, एक वे है कि होचे ही जे पर कर नहीं पावे। मैं हैंगली बहनों ने कहना चाहूँ कि आप जटे हो जेड़ा हो बटो काम री शुरुआत करो और जकी सक्षम बहना है बोने मैं कहूँ कि आप अपने जकी
छोटी बहनों ने भी सपोर्ट करो और हाथ पकड़ने आगे हाथे ले जाओ, जी नहीं तो अपनी बहनों है जकी सक्षम बन पावेला। 2008 में मैंने सिलाई मशीन सही चाहिए, एक सिलाई मशीन खरीदने वास्ते मारे कने रुपया को नहीं आ और मैं नहीं खरीद पाई, हिम्मत हारने लगी। जिन्हें मैं हो जो अकेली तो नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरे आसपास में और भी तो बहनें हैं, बने भी तो दिक्कत होती वेला, तो बने हाथे जोड़न तो मैं कर सकूं। 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनायो, 100 रुपये इकट्ठे कर एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और बिन मशीन रे माध्यमों में काम की शुरुआत की। पिछले 2 सालों में 3500 मशीन निःशुल्क बहनों ने वितरण कर। 2020 में पहली बार अमेरिका में आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर जब इन्विटेशन आयो, मैं कहो भाई न तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, नहीं कॉलेज के बारे में सोचो, हार्वर्ड में जान मैं कहीं करूँगा। 1 महीने तक जवाब को नहीं दियो और हाथे टिकट खुदरी करना आवनो है। मैं कह भाई 10 लाख रुपए मैं खर्च करूँ बटे जान मैं अट काम की कर करो, मैं कह नहीं जावनो मैंने। पाछो मेल आयो, इतो अच्छो मौको है आपरे लिए, आप मौको गवाओ मती, ये हमारी कई पॉलिसियां हैं, मैं नहीं कर सको सपोर्ट, ये वास्ते थाने आवनो है। बी टाइम बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिले हो मैंने, और जब बजाज ग्रुप ने पता चलियो के इतो बड़ो मौको है वे छोड़ रहा है, हार्वर्ड में वे के हमारे बच्चों ने एडमिशन कौन मिले और आप इतो बड़ो मौको छोड़ो, मैं थारो टिकट बनाओ थे जाओ। तो वो टिकट बढ़ाई, कई भाई साहब है जका प्रकाश जी कानून को है बॉम्बे हूँ, वो हमारे अठे हैंगी रेवण की व्यवस्था करी और अठे आने रे बाद में हार्वर्ड में जको 1 दिन रो प्रोग्राम 3 दिन तक चलियो। जिन्ना माने लाग्यो कि कोई भी मौको है वो घमाणो नहीं, क्योंकि मौको बार बार नहीं मिले। लेने बाद में कोविड रो समय आ गयो, सब निराश होने लग गया कि अब तो काम है ही को नहीं, काम की कर कराला, एग्जीबिशन बंद हो गया, बड़ा बड़ा शोरूम बंद होने लग गया, हैंगों ने चिंता होने लगी, उन्हें कोविड में बाड़मेर जड़ी जगह माते ऑक्सीजन की कमी होने लगी। कलेक्टर साहब CMSO ने बोलिया कि भाई कहीं हुए तो मदद करो, लेकिन आप जड़ भाइयों एड़ी मदद मिली कि 7 दिन रे 3.5 करोड़ का इंस्ट्रूमेंट सीधा बाड़मेर पहुंचा। गांव गांव जान हेल्थ चेकअप वास्ते वैनो लगा दी, फ्री में दवाइयों, मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो एडी जकी सुविधा हुई बे थारे जड़े भाई बहनों के सपोर्ट हुई। लेकिन मैं बटे जान कॉम करियो, मने बड़ो गर्व हुए कि ई फील्ड में मैं नहीं आ तो मैं कर पाया। भी के बाद में लाग्यो के ऑनलाइन को जमानो आ गयो, अब गाँव री बहना नहीं तो वहाँ ने फोन है वे कीकर ऑनलाइन जुड़ेला। 200 बहनों ने फोन दिलाया, मैंने ट्रेनिंग दी और मोरे वेबसाइट बनाई rumadevi.com रे नाम हो। बिंगे माध्यम हो बे पूरे कोविड में भी मैंने निराश नहीं होना पड़ियो और आज तक बे वेबसाइट के माध्यम हो काम करे। और rumadevi.com नाम ही वास्ते राखियो कि मैं KBC में गई, बात चली कि ब्रांड बनाना है। अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि ब्रांड तो आपका खुद का होना चाहिए, लेकिन आपका नाम ही ब्रांड बन चुका है तो आपको कोई कुछ और सोचना ही नहीं है। तो मैंने कहा मेरा नाम किसी के काम आ रहा है तो आप बेझिझक लीजिए। तो इस तरीके से ये ब्रांड बना और आप सभी को भी मैं इनवाइट करूं कि आप राजस्थान आओ तो बाड़मेर जरूर आइजो और हमारे बहनों रे जगह बहनों काम करे बने देखजो और हौसलो बढ़ाइजो, क्योंकि जगह डॉक्टर हुए बारे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनोड़ा हुए, फैसिलिटी हुए, बच्चा स्कूल जावे तो स्कूल में फैसिलिटी हुए, स्कूल बनोड़ी हुए, लेकिन जकी मारे बटे बहनों वे काम करे 30,000 35,000, लेकिन मारे कने न तो बैठने कोई रूम है, न मांगे ट्रेनिंग लेने जगह है, पूरे इंडिया में बच्चा आवे इंटर्नशिप करने, न बारे बैठन हिकंडी जगह है, क्योंकि बच्चों ने तो सारी फैसिलिटी सही जे वह फैसिलिटी हाल तक बटे है को नहीं। तो मैं एक एड़ो प्रोजेक्ट तैयार कियो है जो को एक स्मार्ट विलेज तैयार करो, बिंगे में हर सुविधाओं
महिलाओं के हेल्दी वे वास्ते छोटो हॉस्पिटल, बारे बच्चों ने पढ़ने वास्ते छोटी स्कूल और हाथे बाड़मेरी जगह कला है बीरू म्यूजियम, बच्चों रे रहने वास्ते हॉस्टल और महिलाओं रे ट्रेनिंग वास्ते सेंटर। तो ये सारी चीज़ों एक ही जगह माते करना चाहूँ और बी वास्ते था थोड़ा सबरो सहयोग चाहिए क्योंकि और जो प्रोजेक्ट है लगभग 25 करोड़ में पूरा हुएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन रमा देवी जी का। और हम कार्यक्रम में आगे बढ़े इसके पहले हम जरूर से श्याम जी सोनी जी को सुनेंगे क्योंकि उनके भी हमारे मध्य जो वचन है वो बहुत ही सुंदर हैं, तो हम उनको सुनते हैं थर्ड टाइम। और लेट्स प्ले श्याम जी सोनी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि माहेश्वरी महासभा नॉर्थ अमेरिका आगामी 24 से 27 नवंबर तक इंटरनेशनल माहेश्वरी राजस्थानी कन्वेंशन ह्यूस्टन में आयोजित करने जा रही है। गत 20 वर्षों से माहेश्वरी महासभा नॉर्थ अमेरिका का प्रति 2 वर्षों में होने वाला ये उपक्रम अमेरिका में रहने वाले माहेश्वरी और राजस्थानियों को मिलने के लिए और एकजुट होने के लिए बहुत ही अच्छा उपक्रम है। इस अवसर पर भारत से भी बहुत सारे माहेश्वरी वहां पर पहुंचते हैं। माहेश्वरी महासभा नॉर्थ अमेरिका एक अत्यंत सक्रिय संस्था है और देश से बाहर जाकर भी सभी माहेश्वरियों को, राजस्थानियों को अपने देश के कल्चर में ढाले रखने में, तीज त्योहार इत्यादि मनाने में और अनेक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करते रहती है। मुझे गत कन्वेंशन में भी भाई विकास जी भूतड़ा ने और इस कन्वेंशन के लिए बहन अभिलाषा जी ने आमंत्रित किया था। किन्हीं कारणों से मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ, पर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के प्रथम नागरिक के रूप में इस कन्वेंशन के लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय महेश। मेरे लिए ये और भी खुशी की बात है कि भारत से हमारे युवा उद्योगपति कार्तिक बलदुआ इस अवसर पर उपस्थित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कार्तिक जी आपको अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा उसके सारे उपक्रम और कार्यक्रमों से अवगत कराएंगे। इस कन्वेंशन की अत्यंत सफलता की कामना करते हुए जय महेश। Looks like third time is a charm. Thank you, our AV team. I'm extremely overwhelmed and honored to get this opportunity to introduce our next guest of honor. His TV career spans more than 20 years. He's the most popular face of Indian television, the most acclaimed and celebrated poet, one of the highest paid motivational speakers, only actor in the world that has over 3,500 continuous episodes of any soap. His poems are so popular that he is the heartthrob and also an Indian icon. He's received so many awards, Best Actor Awards, Bharat Gaurav. He's been honored in the British Parliament, Rajasthan Gaurav, and most importantly, when our Prime Minister Narendra Ji Modi chose the first 9 Swachh Bharat Abhiyan ambassadors, his team was among the first 9. On behalf of the IMRC 2022 Dignitaries Committee, I now call the ever-witty poet, writer, actor, anchor, and performer, Shri Shailesh Ji Lora, to the stage to share his ideas and thoughts. Thank you. I forgot your name. Ashok. नमस्कार। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। अशोक जी, thank you very much for giving this introduction which I wrote only for myself. And the kind of the marketing everybody has to do in this world, right? Anyways, on the lighter side, all dignitaries on the dais, and Shyam ji, Anuradha ji,
Ramesh ji, I think, has left. Ramesh ji is there. He's sitting there. Yeah, I know Ramesh ji for quite a long time. And Kartike, Ruma. आपको झंवर साहब कहूँ, जामवार साहब कहूँ. I mean, that's the spelling is always, you know. झंवर जी, मुनरा जी, everybody. Jugal ji, sorry. And my guru, Dr. Swati Lodha, who is on the dais. And, no, she is my guru. No doubt about it. She is my guru. And she's on the dais. So she must be, you know, evaluating what I'm doing tonight. Or today, this morning, I'm so sorry. I'm still in jet lag. Ashok ji, thank you very much for calling me on the stage. I do not know what I speak on and what language I have to speak on. Because my English is like my wife. I love it, but I don't have control over it, so... So what I need to speak, I would speak in the evening. लेकिन मैं उसी भाषा में बोलूँगा जिस भाषा में सोचता हूँ. मैं हिंदी में सोचता हूँ. और मेरे लिए ये मेरी माँ है. मैं अपने मित्रों के साथ, अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ, मतलब तमाम मित्रों के साथ मारवाड़ी में बात करता हूँ. लेकिन जब माइक पे होता हूँ तो मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूँ कि वो लोग भी जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वहाँ तक ये रीच हो सके. वरना जिनसे मुझे उस भाषा में बात करनी हो जो दो ही लोगों को समझ में आया तो मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ. बिकॉज मैं मारवाड़ी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ. और तो हिंदी तो माँ है, इसकी गोद में मैं पला बड़ा हूँ. आपने बहुत सारी बातें कही कि मेरे प्रशंसा में, उसके लिए मैं योग्य हूँ नहीं ये तो नहीं पता. लेकिन यकीन मानिए गौरव की जो दो बात मुझे लगती है स्वयं में, और इसमें सबसे बड़े गौरव की बात मुझे ये लगती है स्वयं के लिए कि मैं मारवाड़ की माटी में पैदा हुआ. मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात कोई है नहीं. मैं राजस्थान के बहुत छोटे छोटे गांवों में पला बड़ा हूँ. मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो इतने छोटे गांवों में हुई कि जहाँ उस जमाने में अखबार भी नहीं आया करते थे. और मैं उन अभावों में पला हुआ लड़का हूँ जो आपके बीच में खड़ा हूँ. लेकिन वो मेरी थाती है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है. और आज यहाँ आके मुझे सचमुच बहुत खुशी महसूस हो रही है. मैं उसके लिए दो लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ. जंवर साहब, आप कन्वीनर हैं इस कन्वेंशन के लिए. कैन आई मस्ट नेम टू पीपल. द्वारकादास तापड़िया जी इज़ माई फैमिली, सिटिंग देयर इन इज़ फ्रॉम शिकागो. और आपके माहेश्वरी महासभा की जो पहली कन्वेंशन अमेरिका में सन 2000 में हुई थी, आई केम इन दैट. और आज 22 साल बाद मैं इस कन्वेंशन में हूँ. द्वारका भाई साहब became my family that day onwards. And Sushma Palod. These two people are, you know, Sushma ji, where is she right now? Sushma ji कहाँ है? विजय जी खाने की तैयारी में. So dedicated, right? और आप जिसने सबसे पहले बोला है खाने की तैयारी में, मतलब मैं समझ सकता हूँ आप लंच के इंतजार में हैं. And a hungry man is always an angry man. So मैं आपके और दाल बाटी के बीच में अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ. इसलिए मेरी बात तो हम शाम को करेंगे ही ज़रूर जब हम मिलेंगे. क्योंकि मैं ह्यूमर का आदमी हूँ. मेरे को हंसी के अलावा जीवन में कुछ सूझता नहीं है. क्योंकि हमेशा जीवन में जो कुछ होना चाहिए वो हंसी और आनंद के साथ ही होना चाहिए. मैं आंसुओं का सौदागर नहीं हूँ. विजय जी आप यहाँ बैठे हैं. देखिए सुषमा जी इतना आप काम कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं. आप देखिए. But anyways, I know Sushma ji for again 22 years because after that convention द्वारका भाई साहब called me. मैं ह्यूस्टन आया था सन 2002 में. स्टार पाइप्स भी आया था रमेश जी, मुझे अभी भी याद है. I came to your factory and organization. तो आज 20-22 साल बाद मैं ह्यूस्टन वापस आया हूँ और आपके द्वारा बुलाया गया. और आप में मुझ में बहुत समानता है. देखिए आप राजस्थान से हैं, मूलतः मैं राजस्थान से हूँ. आप लोग लड्ढा हैं, मैं लोढ़ा हूँ. और आप महेश हैं, मैं शैलेश हूँ. तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग बिल्कुल सेम है. और ये समानता जो है वो बड़ी बनी रहनी चाहिए. जो आपकी कन्वेंशन है इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, ये जो प्रयास है ये एक सेरेमोनियल प्रयास नहीं है, ये कोई सरफेशियल प्रयास नहीं है, कोई सतही प्रयास नहीं है. निश्चित तौर पे अमेरिका में इस तरह का आयोजन खड़ा करना ये बहुत आसान नहीं होता. और अपनी परंपराओं को जिंदा रखना, अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, अपने संस्कारों को जिंदा रखना ये बहुत आसान नहीं होता. इतने सारे खूबसूरत लोग जब इस पगड़ी में मैं देखता हूँ और आपस में जब आप लोग बात कर रहे थे, खूबसूरत घूमर जब हुआ, वो 55 जो युवतियां हैं जिन्होंने आके हमारी संस्कृति को यहाँ जीवित किया. निश्चित तौर पे दृश्य ऐसा था जो बहुत आसानी से देखने में नहीं आता. लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं. तब मुझे बहुत छोटी सी कहानी याद आती है, बहुत वर्षों पहले मैंने कही थी कि क्लास में एक टीचर आए, बहुत छोटी सी क्लास थी, मॉन्टेसरी क्लासेस होगी शायद, केजी फर्स्ट की. उन्होंने आके हिंदुस्तान का नक्शा उन बच्चों को दे दिया और कहा कि इस नक्शे को फाड़ दो.
हर बच्चे ने उस नक्शे को फाड़ दिया और कहा जो सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। आप जो कर रहे हैं आप लोग, ये जो MMNA जो है और ये इंटरनेशनल माहेश्वरी राजस्थानी कन्वेंशन ह्यूस्टन जो ये काम कर रहा है 2022 में, मेरे पास इससे कोई श्रेष्ठ उदाहरण है नहीं। उन्होंने बच्चे को नक्शा दे दिया और कहा इस नक्शे को फाड़ दो। सारे बच्चों ने नक्शा फाड़ दिया और कहा जो सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चा 10 सेकंड में उसने हाथ खड़ा कर दिया और कहा सर मैंने जोड़ दिया। टीचर बड़े प्रसन्न हुए हेड़ा जी कि कैसे जोड़ा इतनी जल्दी? बोले कुछ नहीं सर, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे को पलट दिया, उसके पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। जरूरत है व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की, जरूरत है आदमी से आदमी को जोड़ने की, जरूरत है हमारी संस्कृति को जिंदा रखने की। क्योंकि मैं 1000 बार ये कहता हूं, पूरी दुनिया में जाके कहता हूं, मैं इतना सा था जब हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों पे आया 9-10 वर्ष की उम्र में, और आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं छाती ठोक के कहता हूं कि हाँ मैं राजस्थान से हूं, हाँ मैं मारवाड़ से हूं। मैं दुनिया में जहां जाऊं ये कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो जिंदा रहना चाहिए, वो अद्भुत है। इसलिए कोई व्यक्ति मुझसे बहस भी करता है तो मैं उसका ज्यादा जवाब नहीं देता कि इस बहस क्यों करने का मतलब है। शरद जी और सारे लोग जो आप लोग बैठे हुए, अब MC लोग पीछे क्यों बैठते हैं? आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको मुख्य टेबल पे होना चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंशन में ध्यान रखिएगा, ये मास्टर ऑफ सेरेमनी शुड, दे आर मास्टर ऑफ सेरेमनीज, दे मास्टर अस, सो दे शुड बी विद अस। आई रिस्पेक्ट योर जॉब, व्हाट यू आर डूइंग, you did a great job, right? Both of you. Thank you. शरद जी वहां बैठे हुए, राइट? हाँ, मैं वहां ढूंढ रहा था आपको। तो मैं कहता ऐसे लोगों से बहस ज्यादा करता नहीं, मैं जो होता हूं वही करता हूं। हुआ ये, एक बार जंगल में मुझे कहानी अचानक याद आ गई। एक बार एक हाथी और गधे में बहस हो गई। हो सकती है, आप हंस रही हैं, आपकी भी पति से बहस होती होगी, हो सकती है बहस होती। तो बहस हो गई, हाथी और गधे में बहस हो गई। तो हाथी ने कहा भाई आसमान नीला है, गधे ने कहा आसमान लाल है। हाथी ने कहा आसमान नीला है, गधे ने कहा आसमान लाल है। दोनों गए शेर के पास, शेर को कहा राजा जी फैसला कीजिए, बहस कर रहे हैं मुझसे, आसमान नीला है। तो शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़े लगाओ। तो हाथी बोला मुझे 10 कोड़े क्यों, मैं तो कह रहा था आसमान नीला है। बोले जब तुझे पता था एक गधा है तो तूने बहस की क्यों? तो बहस मत कीजिए, अपना काम करते रहिए। और ये मिशनरी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। लोग बहुत आलोचनाएं करेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। दुनिया में एक बात याद रखिए जो मुझे बचपन में किसी ने कही थी कि दुनिया के किसी चौराहे पे, दुनिया के किसी दीवार पे, आलोचकों की परवाह मत कीजिए, दुनिया के किसी दीवार पे किसी आलोचक की तस्वीर आप कभी नहीं पाएंगे। किसी आलोचक का स्मारक दुनिया के किसी चौराहे पे नहीं पाएंगे। जब भी तस्वीर होगी, जब भी मूर्ति होगी तो उसकी होगी जिसने सृजन किया है। जो जिसने सृजन किया वो हमेशा याद रखे जाएंगे, आलोचना करने वाले याद नहीं रखे जाएंगे। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सृजन किया वो हमेशा याद रहते हैं। आप अपनी हिंदी की क्लास को याद कीजिए बचपन में, अपनी हिस्ट्री की क्लास को याद कीजिए। हिस्ट्री में, इतिहास में अगर आप हिंदुस्तान में पढ़े हो स्कूलों में तो पढ़ाया जाता था कि बाबर हुए, हुमायूं हुए, अकबर हुए। लेकिन जब भी हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता तो ये कहा जाता है कि कबीर कहते हैं, मीरा कहती हैं, रहीम कहते हैं, 400 साल बाद भी वो हैं क्योंकि उन्होंने सृजन किया है, उन्होंने आलोचना नहीं की है। और आप सृजन कर रहे हैं और ये सृजन सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये सृजन सबसे श्रेष्ठ काम है, ये होना चाहिए। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा, am I okay? Swati Lodha's 11th book, she is so down to earth, let me tell you, just not because she's my wife. Her 11th book is coming, it has come 2 days back, 3 days back by the Rupa publication. She's Amazon #1 best author. Last book was released by none other than Mr. Bachchan, and he did it. And she became the youngest dean of India of any management institute at the age of 26. So, and जी पुस्तक के बहुत सारे नाम हैं, 11 किताबें हैं। 360 डिग्री एक्सेलेंस आई थिंक मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि मैं अंग्रेजी पढ़ता नहीं हूँ। मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, मैं अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, मेरा इमोशन उसके साथ नहीं है। इमोशन मेरा हिंदी के साथ ही जुड़ता है, इमोशन मेरा मारवाड़ी के साथ जुड़ता है, और जिसके साथ इमोशन जुड़ता है, मैं ऐसा नहीं अंग्रेजी पढ़ता नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी लिखता भी हूँ, अंग्रेजी पढ़ता भी हूँ, लेकिन वो इमोशन पैदा नहीं होता। जैसे जो राजस्थान से मेरा इमोशन है, जो जोधपुर से मेरा इमोशन है, जिन जगहों पे मैं जहाँ मैं रहा, रेवाड़ में, मारवाड़ में, उन जगहों से मेरा इमोशन, वो इमोशन जिंदा रहना चाहिए क्योंकि वो जिंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है। और आप जो सिखा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, रिश्ते, रीति रिवाज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज शायद शाम को जब मैं बात करूँ तो रिश्ते, रीति रिवाज की बात करूंगा क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, ये आने वाली पीढ़ी में ये डालिए, इनकलकेट कीजिए, उन्हें बताइए। आपका दिवाली लेटर हर साल आता है विजय जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी बच्चियों से लिखवाते हैं, वो हर साल कविता लिखती है, शायद
Namita, right? She writes, right? I remember every year it comes on the Diwali, what you did on the whole year and what. और आप वो कितनी बड़ी बात है कि आप अपने पूरे साल की संस्कृति और संस्कारों को जिंदा रखते हैं. द्वारका भाई साहब comes every year to India just to be on the roots of the country. कि वहाँ होना चाहिए. आज उमा भाभी जो द्वारका भाई साहब की भाभी है, उनका बर्थडे है. Let us wish उमा तापड़िया happy birthday. She is here. I suddenly remember. Right, Dr. Uma Tapadia, many happy returns of the day. What a day to have your birthday here, over here, right? तो आप जो कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है. इसे इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि देखिए जो आप कर रहे हैं उसके लिए एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई. एक बच्ची घर में थी, बच्ची बैठी हुई थी, तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी. दरवाजे की घंटी बजी तो उसने बाहर देखा, माँ बाप ने कहा जाके खोलो कौन है. देखा तो बाहर 3 लोग खड़े थे, देखना स्वच्छ श्वेत स्निग्ध धवल सफेद दाढ़ी में 3 लोग खड़े हुए. तो बच्ची ने पूछा कि आइए कौन है आप. तो एक ने कहा कि अपने मम्मी पापा को जाके कहो कि हम तीनों हैं और हम आपके घर में आना चाहते हैं. मेरा नाम धन है, इसका नाम कामयाबी है और इसका नाम स्नेह है, प्यार है. आप जिसे चाहें बुला लीजिए घर में, लेकिन अपने मम्मी पापा को ये कहिएगा कि एक वक्त में एक ही व्यक्ति घर में आ सकता है. तो बेटी अंदर गई कि ये 3 लोग खड़े हैं, मैं किसे घर में बुलाऊं, क्योंकि कह रहे हैं एक वक्त में एक ही व्यक्ति घर में आ सकता है. तो पिता ने जैसे होते हैं, पिता के धन को बुला ले, उसकी ज्यादा जरूरत है. डेफिनेटली ट्रूथ. माँ बोली नहीं कामयाबी को बुला लो. बेटी बाहर गई, उसे पता नहीं क्या सोचा, उसने तीसरे को कहा कि आप अंदर आ जाओ. तो जैसे ही तीसरा अंदर आने लगा, वो तीनों एक साथ अंदर आने लगे. तो लड़की कहने लगी अभी आप तो कह रहे थे कि एक वक्त में एक ही आएगा, आप तीनों एक साथ कैसे आ रहे हैं. बोले बेटा जिस घर में स्नेह और प्यार आ जाता है ना, वह धन और कामयाबी अपने आप चले आते हैं. ये आप जो सिखा रहे हैं और ये जो इस पीढ़ी को सिखा रहे हैं वो बेहद आवश्यक है और वो बहुत जरूरी है और बहुत पॉजिटिव अप्रोच आप दिखा रहे हैं. और ये सकारात्मकता जो है वो बहुत आवश्यक है. अमर साहब बहुत आवश्यकता है. और ये आप जो स्प्रेड कर रहे हैं. Whenever I meet Sushma Palod, I feel so happy, so positive she is always, right? She was trying to make me remember a lot of things which I forgot, but ये पॉजिटिविटी बड़ी जरूरी है. आप इस पॉजिटिव अप्रोच से कर रहे हैं, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि मैं और स्वाति इसका हिस्सा बने और यहाँ पे आए. और ज्यादा खुशी इस बात की है कि आपने इस लायक हमें समझा कि हम यहाँ पे आ सकें, क्योंकि जीवन में ये सकारात्मक तो है जो बड़ी आवश्यक है. भगवान श्री राम ने जब लंका पे हमला किया और जब बारी आई कि लंका पार करके इसको समंदर को पार कैसे किया जाए, तो नल और नील नाम के 2 वानर और उन्हें वरदान प्राप्त कि वो पत्थर उठाएं और उस पत्थर पे श्री राम लिखे, वो पानी में छोड़ दें और पत्थर तैर उठे. इस तरह से पुल का निर्माण होने लगा, पत्थर तैरने लगे. अब ये खबर जब लंका तक पहुंची तो जनता में हाहाकार मच गया. बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, वो तो अद्भुत है, वो तो कमाल है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे. तो जनता पहुंची रावण के दरबार में. तो रावण ने कहा चिंता मत करो, तुम आओ सब समंदर के किनारे पे. रावण भी सारी जनता को समंदर के किनारे पे ले गए. एक पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उस पत्थर को पानी में छोड़ा और वो पत्थर भी तैर उठा. जनता बेहद प्रसन्न. बोले क्या बात है, हमारे राजा को भी ये कला आती है, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है. रावण रात को घर में जाते हैं और शयन कक्ष में मंदोदरी एक सवाल करती है कि हे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आप पानी में पत्थर तैरा नहीं सकते, आखिर किया तो किया कैसे. सकारात्मकता का इससे बढ़िया और इससे बेहतर उदाहरण मैं जिंदगी में आपको दे नहीं सकता. रावण की आंखों में आंसू आकर कहते हैं हे देवी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं पानी पर पत्थर तैरा नहीं सकता. मैंने तो पत्थर लिया, उस पर रावण लिखा और उसे कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो. ये सकारात्मकता बहुत जरूरी है. आप कुछ भी करिए, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहिए, लेकिन अपनी शिराओं में अपना राष्ट्र रखिए, अपनी धमनियों में आपका राजस्थान रखिए, आपके मस्तिष्क में आपकी भाषा को रखिए, हृदय में आपकी संस्कृति को रखिए. तब देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत होती है. आपके लिए, मेरे लिए, अपने लिए यही कहूंगा कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया. हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया. जय हिंद. धन्यवाद शैलेश जी. We have a great pleasure to have you and Swati ji among us. Thank you very, very much. And nothing better than having Shailesh ji can I do a souvenir release. Shailesh ji, अगर आप हमारा souvenir release करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सही रहेगा. This is your copy and thank you for releasing your souvenir.
शैलेश जी धन्यवाद. We have now, I now have the privilege to call our last speaker of the day, none other than our own Pramesh ji. I would like to request all the guests to take their seat on the stage again. Our next speaker is our own chapter president, Pramesh ji Maheshwari. He has been very active in the Maheshwari Yuva Mandal right at a very young age. He then moved to the Middle East and started the Qatar Maheshwari chapter. He then had the privilege to be the president of the Dubai Maheshwari Samaj, and then he moved to the US in 2016. On the professional side, he is the president and CEO of Honeywell Process Solutions. I now call upon our Southwest chapter president to present his words. धन्यवाद, थैंक यू. काफी लोग निकल के जा रहे हैं, यही समाप्त किया जाए क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं. किस विधि वंदन करूं तिहारी ओ वरदानी त्रिपुरारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी, बलिहारी बलिहारी जय महेश बलिहारी. मैं हमारे मध्य मौजूद हमारे विशेष अतिथि, हमारे अतिथिगण श्री शैलेश जी, रुमा देवी जी, कार्तिकेय जी और फिर हमारे MMNE के गणमान्य हमारे सदस्य हमारे मध्य मौजूद हैं. डैडी जी हैं और हमारे पास हमारे मध्य सभी मौजूद हैं. यहाँ पे घनश्याम जी हैं, अभिलाषा जी हैं और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ. और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे चैप्टर की गतिविधियाँ क्या हैं. So Maheshwari Mahasabha of North America, Southwest Chapter has a glorious history of 35 years. It's not today's organization. Catering to the needs of Maheshwaris and Rajasthani families in the region. Southwest has a large number of other ethnicity, very small number of Maheshwaris, but we are making a very small impact. Prominent in the field of business, education, medical, industry and culture. We are working on overall development of Indian society in the region. My committee started working in January 2021, focusing on bringing the community together. We had a very tough time of COVID. Imagine 2021, we had so much of difficulties going on. And then we started working on bringing people together during the very tough personal situation. Many events were planned, maintaining COVID guidelines. Houston, Austin, Texas actively participated in all the events. We did many activities. Makar Sankranti, Holi, Gangor, Mahesh Navami, badminton competition, professional and entrepreneur events, Deepavali. They were all celebrated with full festivities and hundreds of people joined all those activities. Everyone came together for those activities. Gangor, which is very special to Maheshwaris, was also very special to Southwest. With great honor, I would like to say that Southwest won the Best National God Dance Festival Award and Sakhi competition. Very proud moment for MMNA Southwest Chapter. MMNA Southwest Chapter also hosted many community development events, including Peng Initiative, where we talked on different social, economic, career and business subjects. People have been coming together and talking about it. Deepavali, which was our very big festival, it was attended by more than 250 people. And Renuji Khator was there, and all our Ganmanya Sadasya, all our elders were there from beginning to end. A great event. So we have kept on doing a lot of events, and then came IMRC. We are together here in Houston, attending IMRC. We are proud to host this event. I would like to thank NEC, I would like to thank BOT to give Southwest Chapter an opportunity to host this event, where we have close to 900 participants, as Sharaji told. This event, which was originally planned in 2020, but we are doing it now, was the most awaited event for us. So many volunteers, so many activities. I would like to thank everyone who are working on this event. We would also like to thank all the volunteers, team leaders, sponsors, senior members, conveners and co-conveners who have worked day and night for the last 2 years bringing this event to life, and also NEC and BOT. I hope that you all are enjoying this event and you are developing lifetime relationship. यहाँ से हमें जाना है वापस ढेर सारे चाचा, बुआ, ताऊ, काका और उन सब की relationship को लेकर देखते हैं कितनी relationship आगे बढ़ती हैं. So to bring this whole thing forward, before concluding, I would like to thank my wife Archana, who is sitting there. Without her support, nothing was possible. She is not only my best friend but also my best critique also.
Immediately after this, I'm going to get great feedback, so you know what. Also, I would like to thank my son and my daughter, Utkarsh and Udita. They are the best support for me. Wherever there is something happening and they see a gap, they are always there to fill that gap without me telling anything. So great support from my children also. Also, I would like to call upon my chapter team just to come forward. So my chapter team, can I see them here? Please, maybe side of the stage. साउथ वेस्ट की टीम से बढ़कर कोई नहीं हो सकती है. कोविड हो या इन्फ्लेशन हो, रोके नहीं रुक सकती है. So I would like to thank my Southwest team, starting from Naren ji, Swapnil ji, who are on the chapter. On my right, Manoj ji, Vishal ji, Pawan ji, Radhika ji, Jyoti ji, Pratibha ji, Preeti ji, Harish ji, Ankur ji, Pooja ji, and full guidance and support from Sushma ji and Kishore ji. Kishore ji is here, and Sharad ji. So I keep getting your guidance. Thank you all. I would like to welcome you all and announce with this, thanking you all for this IMRC, and I would like to announce the convention open now. Thank you all. Thank you, Pramesh ji. Before I move ahead, पहले क्या होता था IMRC के और अब क्या होता है? 4 दोस्तों को मिलने के बहाने की जरूरत होती थी. 4 दोस्तों को मिलने के बहाने की जरूरत होती थी. IMRC की तैयारी में घर घर उत्सव होने लगे. छोटे छोटे परिवारों में जो शाम गुजारा होती थी, साउथ वेस्ट बड़ा परिवार बना और रोज नए जश्न होने लगे. जश्नों के इस महाकुंभ में चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं. आओ अब हम सब मिलकर IMRC का त्योहार मनाते हैं. आओ हम सब आगे मिलकर IMRC का त्योहार मनाते हैं. धन्यवाद. बहुत बढ़िया प्रमेश जी, बहुत बढ़िया. Thank you everyone for attending this event. So team, what's next? I'm really looking forward to Mahasangram. I'm looking forward to watch the battle of the generations. And I would like to know about what are the new innovations happening, what are we investing into. So I would like to see the Mahesh tank. इंटर चैप्टर नाइट में देखेंगे. आ देखे जरा इसमें कितना है दम. कौन जा रहा है इंटर? कौन जा रहा है इंटरनेशनल इंटर चैप्टर नाइट में? किस को जाना है? रात को मारवाड़ी गीत भी होंगे. कौन जाने वाला है? And Saturday will be fun. I'm excited to see the fusion of Rajasthani and Texan culture at the ranch, followed by a gala night at the hotel. और कुछ हो रहा है? अभी तो कस के भूख लगी है. आज खाने में क्या है? आज खाने में क्या है? दाल बाटी चूरमा. And hey, remember, we're not sleeping tonight. We're going to have a long night ahead of us. हम कौन से सोने वाले हैं? हम भी नहीं सोने वाले. ना ही किसी को सोने देंगे. कोई नहीं सोएगा. कोई नहीं. चलिए इसी के साथ जश्न मनाते हैं. Okay. Thank you everyone. The lunch is now open and being served next door in the food hall. Please enjoy this sumptuous lunch.